Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Namaste ji, namaste. Hope you're doing well and keeping safe. So let's cover out current affairs for the month of April 2022 and national से काम शुरू करते हैं. जैसे कि हम हर महीने categorize कर देते हैं सारे current affairs को, then we'll follow it up with international, sports, etc., legal, जैसे भी category बनेगी. So India Australia signed a ECTA, that is an economic cooperation and trade agreement. Basically, for $50 billion bilateral trade, we are targeting to reach this amount in 5 years. Usually this amount is asked in exams such as CLAT, AILET. For DULB primarily it is किस country के साथ ECTA हुआ है. पहले एक similar चीज़ हमने UAE के साथ भी करी थी in preceding months. Then AFSPA 1958, the Armed Forces Special Power Act, has been decided that from 23 districts of Assam, 7 districts of Nagaland and 6 districts of Manipur, it has been withdrawn from. तो ये 3 states district के ऊपर तो I don't see any MCQ coming कि कितनी district, but Assam, Nagaland and Manipur से this is being withdrawn. So this act provided immunity to the armed forces and this was quite a hot issue in preceding months. Also we have covered out AFSPA on a number of occasions, as in from the perspective of current affairs. Now this is exclusively for AILET and CLAT DULB walo ko, do not bother with this decision. HDFC Bank and HDFC Limited merged into one entity and this is for a short question in CLAT AILET, very high probability. So this is chairman is Deepak Parekh, जो HDFC आपके HDFC Limited के chairman है. तो CLAT usually asks such questions because they are very fond of such personalities in the corporate field. And HDFC Bank, HDFC Limited, CLAT नहीं भी तो primarily AILET goes after such questions. Please write it down. ठीक है जी, आगे चलते हैं. We are basically this is a proposed scheme कि आर्मी के अंदर this is a new entry route called अग्निपथ and अग्निपथ के अंदर जो जाएगा तो वो अग्निवीर होगा. So this is a 3-year duty की scheme for the youth to enter the Indian Army. This is being proposed, but since it was covered out by the major newspapers such as the Hindu etc., we have covered it here. अच्छा, फिर हम चलते हैं कि जी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि आपकी दिस अगर ये क्वेश्चन आया तो प्राइमरली AILET में आएगा, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आएगा. They have issued a new instrument called the Standing Deposit Facility at 3.75% rate. Now this ये जो Standing Deposit Facility के बारे में as usual I'll provide you in your notes. But this question if it shows up, या तो नाम पूछ लेंगे, इंटरेस्ट रेट पूछ लेंगे, एंड अगर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज अ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसके ऊपर तो खैर पूरा सेपरेट लेक्चर ही बनाना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक दैट वी नीड दैट. सो विल जस्ट स्किप दैट एंड आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दिस इन योर नोट्स. जो लोग AILET दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की जरूरत है, बाकी DULB वाली जनता कैन इजीली स्किप इट. दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन NLSAT because NLSAT asked questions till about 6th of April. Akar Patel, the former Amnesty International head, basically he had a lookout circular against him so that he could not travel very freely, and that circular was issued by the CBI. It was primarily stayed by a magistrate order, but a Delhi court then basically ये जो ये magistrate का order आया था कि जी वो LOC हटाओ इनके सर से, it has been restored back. So आकार पटेल ये नाम NLSAT already पूछ चुका है. Maybe CLAT also goes down the same route. Akar Patel, former Amnesty International head, the government doesn't want him to travel because they are very suspicious of his activities. Acha, Helena is the anti-tank guided missile that was successfully tested by India. Then Ministry of Home Affairs on April 11 added Muhyiddin Aurangzeb Alamgir, a member of the Jaish-e-Mohammed, to the list of individuals designated as terrorists under the UAP Unlawful Activities Prevention Act 1967. Now, ये तो मैंने पढ़ तो दिया है स्क्रीन से, क्वेश्चन क्या बनेगा? Under which act are terrorists? Can an individual be designated as a terrorist? Unlawful Activities Prevention Act 1967. नाम तो I doubt क्योंकि नाम तो बहुत सारे होते हैं. नाम I don't think is important, but act is pretty important. The year is pretty important. Please write it down. Then under the Seema Darshan project, Seema Darshan as in border ke darshan, right? Vaga of Gujarat. So a new point has been opened in the I think in the Kutch area of गुजरात, जहाँ पे आप बेसिकली 0 पॉइंट जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर है जस्ट वहीं पे जाके वो खड़े होके उस पॉइंट को देख सकते हो. तो वाघा ऑफ गुजरात जैसे वाघा बॉर्डर अमृतसर में. Alright, Khelo India University Games 2021 are being hosted in Karnataka, specifically in Bengaluru.
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, ये मैंने गलत नहीं लिखा हुआ, उनका नाम ही 2021 है, तो आई थिंक पिछले साल वाली पोस्टपोन हो गई होंगी, ऐसा कोई इशू रहा होगा. एंड देन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी होस्टेड इन हरियाणा व्हेन यू विल बी टेकिंग योर DOLB एग्जाम. अच्छा, now this is extremely crucial, mark it somewhere in red. The IRMS has been created, so this is a gazette notification regarding the creation of Indian Railways Management Service. IRMS, ये नाम लिख लीजिए. So which is the new service that has been recently constituted by the Indian Railways? That's IRMS. And इन्होंने 8 ग्रुप A सर्विसेज को मर्ज करके ये बनाई है. ये 8 की लिस्ट तो मैं आपको आपके नोट्स में दे ही दूंगा, बट IRMS कृपया करके लिख लीजिए. और ये तो याद होना ही चाहिए. ये तो आई थिंक 8 अगर हम करें ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है जो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है, बट क्वेश्चन तो बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not one of the services that has been basically created under, merged under the IRMS, right? तो फिर ये 8 come into role, and majority if attempting this question will obviously treat it as तुक्का, hit or miss वाला question है, but एक बार ही जरा आप नोट से पढ़ लीजिएगा. Then Meta's WhatsApp, now this is AILET exclusive. AILET shortly asks such questions. Meta's WhatsApp has been granted permission by the NPCI, National Payment Corporation of India. Hopefully static GK से NPCI payment method वगैरह वाला lecture आप देख चुके हैं. And permission to add 60 million users to its UPI system. वो WhatsApp पे आजकल आ रहा है ना UPI वाला ऑप्शन, वो रुपए का जो सिंबल जो बना रहा है, उसमें 60 million users they want to add, taking their total users to 100 million users. AILET में अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट. अच्छा, प्रधानमंत्री संग्रहालय has been opened at the तीन मूर्ति complex as part of आज़ादी का अमृत महोत्सव celebration. That is 75 weeks we are celebrating for 75 years. और this photo I don't think will be clear thanks to the contrast ratio of the digital board, but it has 2 hands ऐसे करके, this 2 hands, and ये आपका ऊपर हमारा जो चक्र है from our flag. Hopefully you watched the national symbols वाला lecture from static GK. ठीक है जी, वहाँ पे covered है. So where has it been inaugurated? The तीन मूर्ति complex. So the Congress also attacked the current government कि आप जवाहरलाल नेहरू की जगह जो तीन मूर्ति complex is primarily associated with him, कि his legacy you are tarnishing, but they have opened a museum. It's called Pradhan Mantri Sangrahalaya. Basically it lists out all of the achievements, the major work done by all the prime ministers of India till date. Alright, now this again is extremely crucial. Write it down. First commercial flight of a made in India Dornier 228 aircraft. DORNIER. Dornier aircraft looks something like this. पंखे वाला plane है. थोड़ी photograph again. Thanks to the contrast ratio of digital board पूरा अच्छे से नहीं आ रहा होगा, but hopefully you get that. I think दिख रहा है मुझे कैमरा में आ गया. ठीक है जी. अच्छा, this completely made in India. This was the first commercial. ये आपकी flight of a plane completely made in India. April 12, Arunachal Pradesh to Assam, and airline was Alliance Air. तो कृपया करके सारी डिटेल्स लिख लीजिए, मेक्स इट इम्पोर्टेंट. अच्छा, अब हम क्योंकि इन्फ्लेशन के बारे में इतनी सारी बात चल रही है, तो अब ये बाय द वे ये मैं करा चुका हूँ स्ट्रैटेजी के मॉड्यूल में, इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में, कृपया करके वहाँ से भी रिवाइज कर लीजिएगा. यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ ताकि आप मिस ना कर जाएं. ये हमारे आलसी भाई बहनों के लिए हैं जो कि वहाँ पे जाके नहीं देखेंगे, बाद में कहेंगे ओ अकेडमी वाला तो कराया नहीं था, ये कराया था, देखा नहीं गया था. अच्छा, रेपो रेट इज रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक. मतलब मान लीजिए ICICI ने अगर RBI से लोन लेना पड़े उनको, तो दैट दे विल बेसिकली टेक द मनी एट द रेपो रेट. एंड व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट? द RBI pays to bank for parking money in rather at RBI. तो ICICI ने लेटर से 500-700 करोड़ रुपए RBI के अकाउंट में अपने बेसिकली बैंक, तो वो उनको, जैसे आपको मेरे को सेविंग्स अकाउंट रेट हमें बैंक मिलता है, तो बैंकों का बैंक RBI है, RBI पे पैसा रखवाया है, तो जिस बैंक को अब उस पे वो RBI विल पे एन इंटरेस्ट ऑन इट. सो दैट इज द रिवर्स रेपो रेट. तो ये दो टर्म्स बहुत बारी आ गई न्यूज आर्टिकल्स में, तो हमने भी दोबारा कवर कर ली. ये बाय द वे सब कुछ कवर. ठीक है जी. Cobivax is the vaccine that has been approved for children 5 to 11 years. Since this is a April का current affair, write down the vaccine करें. अच्छा, this again is extremely crucial. The name of the submarine project is Vakshir या Vakshir, whatever नाम होगा. वैसे वाकशीर होगा क्योंकि रशियन सा नाम सा लग रहा है, वैसे संस्कृत भी होगा यहाँ पे. Vakshir is the 6th submarine of the P75 project. Write this down. And official name at the time of commission होगा, but this project has been launched
Alright, so this is a final Scorpion class submarine. Scorpion class is a specific French sort of a, मतलब France वगैरह ने बनाई थी. This is a diesel powered submarine. It has a lot of evasive maneuvers etc. The project, ये final of those lists worksheet has been now been, the project has been launched. मतलब बनेगी और commission होगी नेवी में बाद में, but अब ये project launch हो गया और since ये अप्रैल में हुआ है इसलिए सबमरीन का नाम important है. ठीक है जी. अच्छा, रेड फोर्ट से मोदी जी ने एड्रेस दी सिख कम्युनिटी ऑन दी birth anniversary, I think birth anniversary थी, death anniversary थी, I'll just write it down, of Guru Tegh Bahadur. It was the 9th Sikh Guru. ठीक है जी. I think it was the 401st birth anniversary. ठीक है जी. अच्छा, and this at the Mamallapuram beach, ये आपका ये जी basically पानी वानी wash out हुआ, तो stones from Pallava period were found at that beach. So this was quite a significant news. UPSC के लिए तो बहुत ज़्यादा important है, but since UPSC के crowd को हम cater down नहीं करते क्योंकि वहाँ पे history का अपने आप में prelims में तैयारी करनी होती है, तो Pallava period से stones मिले थे. Now this has to appear. This will appear. For Palli is ये जो district है JNK, this is the first carbon neutral पंचायत of India. And what does carbon neutral पंचायत mean? वो clean and green power. ठीक है जी. 48.6 billion ये आपकी real time transactions हुई digital, and we have overtaken China. China's at 18 billion and we are almost thrice their amount now in digital transactions. Paytm करो, right? नोटबंदी के बाद यही हुआ. और उसके बाद राजस्थान is the state that is going back to a DPBS from NPS. AILET वाले तो इसको स्टार लगा लें और almost 99.99% उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आएगा. Which state has shifted back from NPS? So NPS का फुल फॉर्म है न्यू पेंशन सिस्टम. दिस इज अ डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम, जो पुरानी वाली DPBS. ये ऐसे प्रश्न तो AILET में बहुत आते हैं. अच्छा, तो ये भी पूछ सकता है कि डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम कौन सा स्टेट गया, राजस्थान, या राजस्थान ने कौन सी स्कीम को अडॉप्ट कर लिया, DPBS ओवर व्हाट NPS. सारे MCQ बन गए. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Now again, extremely crucial. All right, Raisina Dialogue is the intelligence agency chief conference that was hosted by New Delhi. This was modeled on the Munich Security Conference and on ये आपका जो सिंगापुर शंग्रीला कॉन्फ्रेंस. तो ये शंग्रीला कॉन्फ्रेंस बेसिकली बाहर जैसे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होती है, शंग्रीला कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसे अब हिंदुस्तान इज अब नाउ अ मेजर जियो पॉलिटिकल पावर. वेल, one of the best accomplishments of the present government is its foreign policy. Criticisms aside, criticism तो हर आदमी गलत करता ही है, हर आदमी सही करता है, बट फॉरेन पॉलिसी में ये लोग इन्होंने ठीक काम करा. तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड सिंगापुर की शंग्रीला कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे, ऐसे ही मतलब मॉडल पे, हमने एक राइसीना कॉन्फ्रेंस कराई. राइसीना कॉन्फ्रेंस, और इसमें जो चीफ गेस्ट थी, दिस वाज द यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन. कृपया करके लिख लीजिए, इस साल पूछ ही सकते हैं कि जी हु वाज द चीफ गेस्ट. ये नाम उर्सुला वॉन डेर लेन, और ये रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा नाम प्रसिद्ध हुआ है, तो कृपया करके प्लीज़ डू राइट इट डाउन. अच्छा, अब हर जगह बुलडोजर चलाने की बात आ रही थी. वहाँ जहांगीरपुरी में बुलडोजर चले, अलग अलग स्टेट्स में बुलडोजर चल रहे थे, तो बुलडोजर चलाने की बार बार बात आ रही थी. तो बुलडोजर से एक्चुअली एक जजमेंट निकल कर आती है, जो शायद ULLB में शायद इस बार उसका जजमेंट इस पे नाम दिया, ओल्गा टेलिस वर्सेस BMC, जिसमें ये कहा गया था राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट of the fundamental right. Article 21, where are fundamental rights given? Part 3 of the Constitution. The right to livelihood is a fundamental right under Article 21. This was given in Olga Tellis versus BMC. वहाँ पे भी गरीबों को फुटपाथ वगैरह से हटाने की बात हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको their eviction should not cause their livelihood to be taken away from them. So this was the judgment. तो जब बुलडोजर चलता है basically for encroachment, ये जजमेंट वो पुराना भूत है, जाग कर आ जाता है सामने. तो इस साल भी आ गया, तो इस साल लिख लेते हैं, सिंपल बात है. 25 पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, और इसके अंदर अप टू 300 यूनिट्स फ्री बिजली वो लोग मुहैया करा रहे हैं, और शायद स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज वेल. दे आर वेरी शूट पॉलिटिशियंस नाउ एंड दे आर कैरिंग आउट देयर प्रॉमिस, सो यू नो होप बोड्स वेल फॉर देम टू कम बैक टू पावर लेटर. बट ये क्या क्वेश्चन क्या आएगा, अप टू व्हाट यूनिट्स ऑफ बिजली? अप टू 300.
बहुत low probability है, but still I just want you to write it down. Now the RBI's annual report on currency and finance, AILET वाले स्टार लगा लीजिए. It basically immediately caught everyone's attention, stating that as an economy, India is expected to overcome COVID-19 losses in 2034 to 2035. This is the MCQ. As per RBI's current report on currency and finance, when are we expected to cover the losses that we faced during the COVID-19 crisis? That's 2034 to 2035. Yes, that's how you filter out MCQs, basically current affairs, because current affair तो भैया बहुत बड़ा पहाड़ है. उसमें एक्वागार्ड लगाने के बाद ही तो वो कह रहे जी मेहनत लगती है इसमें बहुत ज़्यादा और देखना पड़ता है एज पर विच एग्जाम यू आर टीचिंग फॉर, सो दैट यू नो द स्टूडेंट दैट यू आर ट्रेनिंग डजंट लर्न अननेसेसरी थिंग्स, क्योंकि दिमाग लिमिटेड है. बाकी सेक्शन भी तो है ना एग्जाम में, कितना पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स भी. अच्छा जी, नीति आयोग टू रिलीज फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स. So they have released it and Gujarat has topped it. You tell me whether this is an important current affair or not. Niti Aayog. Acha. Who will publish State Energy and Climate Index? Who is publishing it? Niti Aayog. Who has topped it? Gujarat. Goa in smaller states, Gujarat in bigger state category. And since this new index came out in April, the probability of this appearing in your exam shoots through the roof. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Semicon India, that is the हमारे semiconductor production in India का प्रोजेक्ट का नाम है. That's a 72,000 crore project. इसके बेसिकली अभी सरकार से दोबारा फंडिंग मिल गई. तो प्रोजेक्ट का नाम, क्योंकि now this is popped up in the current affair feed, तो Semicon India आ गया. ठीक है जी. Now India tops the world in deaths in road accidents. तो ये जी एक World Road Statistics 2018 brought out by the International Road Federation Geneva. India ranks number 3 as per number of road accidents and number 1 as per persons killed. तो ये मिस्टर गडकरी जी ने अपना रिप्लाई दिया था पार्लियामेंट में. किसी कोई क्वेश्चन दिया होगा सामने वाले ने, उसका रिप्लाई दिया था. एंड सिंस दिस अपीयर्ड इन द हिंदू विद क्वाइट लॉट ऑफ फोकस, जरा ये लिख लीजिए रैंकिंग. ये वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स WRS 2018 पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल रोड फेडरेशन जेनीवा. अब किसी एग्जाम में इस साल ये पूछ लिया ना WRS 2018, तो उसके बाद ये होगा अरे सारे वो पिछले वाली रिपोर्ट के भी सारा डेटा नहीं, ये इसी साल का करंट अफेयर है बंधु. इस साल का करंट अफेयर तो पूछा तो जाएगा ही. ठीक है जी. अच्छा, ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, will be hosting the 21st WCOA, that is the World Congress of Accountants, also known as the Kumbh of, referred as Kumbh of Accountants, for the first time since ICAI was established. This is quite a professional body. CA वगैरह का एग्जाम यही कराती है, right? तो ICAI will be hosting this. Bhubaneswar will get country's first Skill India International Center, minor current affair. And यहाँ पे India's first 99.999% pure green hydrogen plant will be basically established in Assam. Green hydrogen के बारे में हम बहुत बारी बात कर चुके हैं. Very high chance of this concept appearing कि जी what is green hydrogen. ठीक है जी. अच्छा, now since you are into a law entrance, कृपया करके, ये एक्चुअली लीगल में भी डाल सकता था मैं, बट मैंने यहीं पे डाल दिया. नफीस, NAFIS. Madhya Pradesh has become the first state in the country to identify a deceased person through the National Automated Finger Identification System. NAFIS का full form is National Automated Fingerprint Identification System. That's NAFIS, and under which workstations were set up in every state for identification through fingerprint and palm print database and matching system. तो मध्य प्रदेश में एक deceased body मिली इनको जंगल में. NAFIS के थ्रू उन्होंने फिंगरप्रिंट के थ्रू ये डिटेक्ट किया कि भाई साहब ये है कौन. अब वो इसके काउंटर साइड ये है कि वो राइट टू प्राइवेसी आर्ग्यूमेंट, सर्वेलेंस, फलाना ढमकाना, बट ये स्कीम का नाम हमें याद रखना है. ठीक है जी. अच्छा, द कंट्रीज फर्स्ट L root server, so Rajasthan has gotten the first state to get a L root servers which will help them implement digital schemes and deliver and stick to their goals, जो भी digitalize करना है. So this is an L root server. AILET वाले स्टार लगा दीजिए, लाल में मेंशन कर दीजिएगा. First Amrit Sarovar, so they are cleaning up ponds and developing them from scratch, has been established in UP's Rampur. So this is the first Amrit Sarovar. ठीक है जी. ये लेक्चर को यहीं काटते हैं, and then to keep it organized फिर इंटरनेशनल में चलते हैं. फिर आगे अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट बहुत सारी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रैल वाली अपॉइंटमेंट्स. इनफैक्ट अभी तक भी मैंने जो कराया ठीक है, इसमें से जो आ गया सो आ गया, बट अपॉइंटमेंट्स तो बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल हुई है एग्जाम के लिए.
तो उसका भी काम कर लेते हैं, ऐसी कैटेगरी वाइज लेक्चर्स सारे के सारे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑलराइट, नाउ सी यू इन नेक्स्ट, टेक केयर।